कहूंगा डीएम फोन करते हैं, इनके पिताजी को जबरदस्ती कहा कि भाई दाढ़ी बनाने के लिए आओ, कुछ एकदम लठैत सब भेज दिया, अगर नहीं तबीयत खराब है नहीं जाएंगे। तो कैसे नहीं आओ, ले आया। तो डीएम को पता चला तो डीएम पकड़ के रख लिया उसको। कर्पूरी ठाकुर को फोन गया, बोला नहीं नहीं डीएम साहब उसको अरेस्ट नहीं करना है, मेरा गाँव का है, हम देहाती भाषा में कहते हैं गौवा है मेरा, गौवा है मेरा, उसको अरेस्ट नहीं करना है। बोला सर इकबाल का सवाल है जिले का, ये कैसे हो सकता है। बोला नहीं नहीं, इतना कैसे कितने बापों को आप बचा रहे हैं, रोज रोज गरीबों के बच्चे मारे जा रहे हैं, आर यू एबल टू सेव देम। ये साइकिल ऑफ हिस्ट्री है, टाइम है ट्रांसफॉर्मेशन का, टाइम विल टेक केयर ऑफ दिस। ये हुआ। और एक इंपॉर्टेंट चीज हुआ जिसकी हम चर्चा अभी तुरंत करेंगे, मुंगेरी लाल कमीशन जो सेटअप, उसके ड्राफ्ट तैयार हो गए थे कर्पूरी ठाकुर के टाइम में, बट ये क्रेडिट जाना था भोला पासवान शास्त्री को। वो चीफ मिनिस्टर बनते हैं, पूरा ड्राफ्ट रेडी है, बनने के कुछ 4 दिन के बाद ड्राफ्ट वॉज रेडी। हाँ, लेकिन थैंक्स टू जो सपोर्ट किया लोकतांत्रिक कांग्रेस पार्टी टूट गई थी, उन्होंने सपोर्ट किया भोला पासवान शास्त्री को, और वो सेटअप होता है। और देखिए हाउ कांग्रेस मिस द हिस्टोरिक चांस। कर्पूरी ठाकुर टोल्ड जगन्नाथ मिश्रा इन द असेंबली, डॉक्टर साहब जब ये प्रेजेंट किया गया था मुंगेरी लाल कमीशन, यू वर द चीफ मिनिस्टर इन 1976, व्हाई डिडंट यू इंप्लीमेंट इट। आप क्यों इंप्लीमेंट, किसने रोका था आपको इंप्लीमेंट करने से, आप इंप्लीमेंट नहीं किया आपने। जब 78 में आते हैं, 77 में सरकार इनकी बनती है, और लोग कहते हैं तुरंत बनेगा, बनी इनको तुरंत करना नहीं, 1.5 साल इंतजार किया इन्होंने, मोबिलाइज किया, पब्लिक ओपिनियन हुआ, भाई डिफरेंट पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स में डिस्कशन होता है, असेंबली में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भाई क्या हुआ आपका मुंगेरी कमीशन का, तब ये इम्प्लीमेंटेशन था। ओरिजिनल आइडिया वाज 12+8, 12% टू ईबीसी एंड 8% टू ओबीसी, बट देयर वाज डिसेंशन, और उस ग्रुप में इंक्लूडिंग द भारतीय जनसंघ, दे सेड कि नो नो, देन देयर वाज compromise formula, 3% for women and 3% for what we call EWS. So some way he was the pioneer of vertical and also horizontal equity within equity. वो कंसेप्ट वहां से शुरुआत होती है। और वो उसके बाद क्या सर हमको बताएंगे, हम लोग चर्चा कर रहे थे कि जो प्रोटेस्ट होता है, कितनी भद्दी भद्दी गालियां, अनप्रिंटेबल गालियां दी जाती है। और ही रिस्क इज गवर्नमेंट, देवराज और कर्नाटक चीफ मिनिस्टर वो बाद में करते हैं, अपना 1 साल जब बचता है तब वो इम्प्लीमेंट करते हैं। इन्होंने 2 साल के बाद अपनी सरकार को दाव लगा दिया, बिकॉज इन्होंने कहा नो नो अब इसको डिले नहीं करना है, सत्ता जाए तो जाए। और ही वॉज फर्म, और ही इज नॉट देयर टू डिफेंड हिमसेल्फ। उन्होंने कहा कि बैकवर्ड फॉरवर्ड तो हमने बनाए हैं क्या, ये शास्त्रों में बने हैं। वो गरीब अगर शेड्यूल कास्ट हैं, गरीब हैं तो वो उनके कास्ट का क्या लेना देना है, वो गरीब है और शेड्यूल कास्ट है तो उसी तरह से है। और हमने वो एक इक्वालिटी के लिए उस चीज को एक थोड़ा सा उनको पुश देने के लिए किया है, और इसका विरोध हो तो हो। So he was never apologetic about it, and he was called casteist. Then his dear friend Kapil Dev Singh, who came from upper caste, defended him. You can call me casteist. My caste has some population in Bihar. Kapil Thakur's caste doesn't have much population, just 1.5%. How can you call him a casteist? उनको तो उस जो वो जननायक अचानक जो बन जाते हैं टीवीसी लीडर, that was the post 1980 phenomenon. Before that, of course, there was dominance of Yadav leadership का start हो जाता है. If you read the book of Jeffrey Widtsoe, Democracy Against Development, he has wonderfully written book. उन्होंने कितना बढ़िया से एक्सप्लेन किया है कि पोस्ट कॉलोनियल में कास्ट का कैसे होता है, प्री कॉलोनियल में संस्कृताइजेशन होता है, डिसंस्कृताइजेशन होता है, और रिजर्वेशन जब आता है तो सब लोग अपने रिजर्वेशन की तरफ, अपने कास्ट सरनेम की तरफ दौड़े भागे चले आते हैं। अभी देखिए किसी पार्टी का कोई प्रवक्ता के अगर नाम में अगर उनका सरनेम नहीं है तो वेरी वो ये हो जाता है कि नहीं वो मेरा सरनेम के साथ लिखा जाए, वो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स बहुत हावी हो गई। तो 84 की जब हार होती है तो कर्पूरी ठाकुर उस समय थोड़े से टूट जाते हैं, तो वो चेंज करके सोनबरसा चले जाते हैं। अब उस समय चरण सिंह के साथ भी कोलैबोरेट करते हैं तो थोड़ा ईगो टसल होता है। तो चरण सिंह का था कि जब वो लोक दल बनता है, 85 की बात बोल रहा हूँ, तो उन्होंने कहा कि रामजीवन सिंह स्टेट प्रेसिडेंट हैं, आप चीफ मिनिस्टर हैं, तो एक 45 में 23 आर यादवाज उसको आप डिप्टी स्पीकर का दे दीजिए। तो वो हाँ हाँ कर देते हैं। रामविलास पासवान वाज प्लेइंग द कन्वीट, तो वो आते हैं तो रामविलास पासवान खुश नहीं करते, नहीं नहीं, चरण सिंह बोलते हैं कि नहीं बाबूजी का ने वो कपूर जी मान जाएंगे। मतलब अचानक क्या हो जाता है, शिवनंदन पासवान को डिक्लेयर कर देते हैं। तो ये फोन करते हैं रामविलास पासवान की, अखबार में छपा है शिवनंदन पासवान बन रहा है। तो कर्पूरी ठाकुर कहते हैं अखबार में छपा है तो ठीक ही छपा होगा।
फिर वो झगड़ा हो जाता है, बात हो जाती है कि इनको रिमूव किया जाए, बट ही स्टूड हिज ग्राउंड, बट अनलकीली ही हैड हार्ट स्ट्रोक इन 19 माइल्ड हार्ट अटैक 1985, और फिर बाद में चरण सिंह बीमार पड़ जाते हैं, 87 में चरण सिंह चले जाते हैं, फिर बात आई गई हो जाती है। तो बहुत निराशा होती है, और फिर वो 87 में यू नो व्हाट हैपेंड, 87 में किस तरह से इनको हटाया जाता है। शिव चंद्र झा कांग्रेस के वो स्पीकर हैं, और ये अपना नंबर शो करते हैं सामने में, लेकिन फिर भी नहीं मानते हैं, तो इनको हटा दिया जाता है। तो उस दिनों में बहुत उदास हुआ करते थे, जिंदगी में वो कभी अंगूठी नहीं पहनते थे। तो उस समय क्या हुआ, किसी ने साधु बाबा ने कहा कि आप अंगूठी अंगूठी पहनिए तो आपके दिन बहुरेंगे। तो एक दिन खाना खा रहे थे, रामजी ना अंगूठी देखे उनके कि कपूर जी की कर लियो अपने, तो क्या हुआ, अंगूठी पहना चाहिए, तब के बांधना है ना तो मन को बांधिए, तन को बांधने से क्या होगा। ये लाइन सुने तो ऐसे उंगली उठा के उसी से फेंक दिए, नहीं पहनना, उनके पहली बार पहने थे, ऐसी बात कर दिया। फिर वो लड़ाई लड़ते हैं लेकिन जीत नहीं पाते हैं। फिर वो 87 का बहुत ब्लैक ईयर होता है, और 88 में आप यू नो कि फरवरी में उनका डेथ हो जाता है। दैट इज आल्सो अ सॉर्ट ऑफ हिस्ट्री, क्योंकि एक साधु आता है, वो एक सांख्य योग के हिसाब से, तथा मैंने पढ़ा नहीं है, कि 13 लीटर का घोल जो है उनको उल्टी करवाता था नमक का, जबकि उनके डॉक्टर, डॉक्टर कौन, डॉक्टर सीपी ठाकुर, जो बाद में मंत्री बने, बीजेपी के एमपी, उनके डॉक्टर थे। उन्होंने कहा कि ये कन्वेंशनल लॉजिक है भाई, कि बीपी के पेशेंट को सॉल्ट नहीं चाहिए, आप कैसे सॉल्ट दे सकते हैं आप। तो लिया, अटैक हुआ, लेकिन फिर भी वो उस साधु को किसने भेजा, वो उनकी डेथ के बाद कहाँ गायब हो गया, रघुवंश प्रसाद सिंह ने लेटर लिखे तो क्यों नहीं हुआ। तो ये सारी रहस्य में रह गया। तो मैंने कोई इंसिनुएट नहीं किया, आई डिडंट इंसिनुएट, जो मेरे रिकॉर्ड में आया है, आई रोट अबाउट द बुक। आई थिंक आई एम टेकिंग अ बिट लॉन्ग। ये वो सारी चीजें हो जाती है। और लास्ट चैप्टर में मैंने क्या किया है, थोड़ा सा इसकी फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ, कि जस्ट टू कंटेक्चुअलाइज, टू जस्ट टू हेल्प द रीडर्स लाइक दिस लॉट, कि मैं व्हाई दे शुड रीड कर्पूरी ठाकुर, आई हैव ट्राइड टू ड्रॉ कंपैरिजन, आई एम नॉट सेइंग वर्सेस, कर्पूरी ठाकुर एंड थ्री चीफ मिनिस्टर, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, लालू प्रसाद एंड नीतीश कुमार। डॉक्टर श्री कृष्ण का पीरियड, आई थिंक ही रिप्रेजेंटेड द मोनोलिथिक स्ट्रक्चर ऑफ कांग्रेस। उनके लिए क्या था, इट वाज समथिंग लाइक कि भाई मतलब एक पार्टी का रूल है, कंफर्टेबली आप मतलब आप 700 रन पहले इनिंग में बना लिए, टाइप बैटिंग कर रहे, उस टाइप का था। बट नथिंग टू टेक अवे फ्रॉम हिम, ऑल द बिग इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट्स, जितने भी इंडस्ट्री की बात हुई उन्हीं के टाइम में हुई। तो इफ वन टॉक्स अबाउट द डेवलपमेंट विजन, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, देन Sri Krishna Singh would be, Dr. Sri Krishna Singh would be up there. When you talk about the sloganism, कि भाई कैसे सोशल एम्पावरमेंट का, सोशल जस्टिस के स्लोगन को यूज किया जाए, तो लालू प्रसाद would be up there. But here is a man, नीतीश कुमार, पब्लिक पॉलिसी जो जितना था, 50% रिजर्वेशन फॉर वुमेन, 35% रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन गवर्नमेंट जॉब, बाइसिकल स्कीम, स्कूल यूनिफॉर्म, जेंडर बजट, ऑल द पब्लिक पॉलिसी वंडरफुली। आप आई सी, जो पर्सन जीवित होता है तो हम थोड़ा सा अनकाइंड होते हैं। आई थिंक हिस्ट्री कुड बी काइंड टू हिम, मे बी आफ्टर 20 years नीतीश कुमार कोई और बात का जनरेशन लिखेगा, जस्ट एज आई एम काइंड टू कर्पूरी ठाकुर, दे कुड बी काइंड टू नीतीश कुमार की भाई इतना सारा पायनियरिंग चीज को किया, उस चीज को स्टडी किया, पब्लिक पॉलिसी। फी वेवर कर्पूरी ठाकुर अपना नहीं दे पाते थे। ओल्ड एज पेंशन, एक बार वो हर बार जीतते थे 25 पैसा देती थी उनकी माँ और पापा बाबूजी, तो माँ ने दे दिया, बाबूजी के पास पैसा नहीं था, घर से निकल गए। वहीं से आइडिया आया कि बूढ़ों के पास पैसा होना चाहिए। ओल्ड एज पेंशन, स्कूल का फी वेवर, ओल्ड एज पेंशन, घाट से दुल्हन गुजर रही है तो घट ही लगता था, क्यों भाई, दुल्हन गुजरेगी, नया नवीन शादी करके आया है, जाकर के वहाँ रिसेप्शन देगा, तुमको काय घटी देगा। तो ये सारी छोटी चीजें जो उन्होंने जीवन में भुगता था। तो आई डू नॉट कॉल इट प्रो पुअर पॉलिसी, आई कॉल इट प्रो पीपल पॉलिसी। ही वाज द फाउंडिंग फादर ऑफ असर्टिव एक्शन इन गवर्नेंस, जो कि विच इज नाउ बॉर्डरिंग ऑन competitive populism now. So thank you so much. Thank you very much. I am sorry I forgot to take the name of Dr. Azhar Ali Sahab, who is the third faculty. I mean, really sorry. सारे गुरुओं को मैंने कह दिया भाई, irrespective of the age, कि पहुंच आवे हैं बुजुर्गों को, तो फन आया है। Very popular teacher in the Department of Political Science. Most of the students are aware of him. So now over to Professor Aejaz Masih Sahab, and then
start with Is Trivedi Professor Saab? Aejaz. चल रहा है पे? Is this working? I think it should. I think. थोड़ा पानी बारो करता हूँ. A very good afternoon. With the permission of the chair, dear co-panelists and learning colleagues, dear students. Am I audible? Yes. थोड़ा सा कम. You can come a bit close. Yeah. I think first of all, I must congratulate the writer of this book, the two writers, that he not only, or they perhaps, because Aditya Anmol is also the co-writer of this book. Yeah. When I, honestly speaking, I have not read the complete book. This is my limitation. So what I will keep that limitation in mind. Being the student of research methodology, I must know my own limitations. So first I am sharing with you my limitation that I have not read the whole book, but some part of the book obviously I have read. I want to congratulate because of two reasons. The one is he or they provided a platform for us to think about Karpoori Thakur. I have my personal inclination, affiliation for Karpoori Thakur. Being a Bihari, I am also a Bihari. So that affiliation is more of a, what I should say, that is not a very objective, but more of a subjective kind of affiliation. You are also never Samastipur and Begusarai. So very near, yes. And I have a relationship in Kochia. Acha. So that's why also. That makes it more specific. Yeah, more specific. So these are the things. But there is another reason also. That perhaps first time I read a book written by a journalist, which seems to be that it's a very much a book of research-based book, a book of empirical study, a book where lot of efforts have been done to procure the data and also try to assess the sanctity of data by cross-matching those anecdotes with other anecdotes. So that's why I am very impressed for this. I am having one reservation also about this book as a whole, that this book, perhaps the chairperson said that it is a political biography. So I am having a reservation about saying the political. It may be political, but it's much more than political. Being a student of education, I look this book with a different angle. So these are the things which I want to share before actual talking about my own viewpoints regarding this, which is a very limited in scope. And because I read only a small part of this book, that's why I can't claim. Once the speaker, the writer said that Karpoori Thakur once said that I am like a ज़बान दांतों के बीच, और मुझे 32 दांतों के बीच, मुझे एक शेर हमारे अपनी गांव के एक शायर बेखुद हैं, उनका याद आ गया इनकी ये बात सुन करके। खुलूसे कार से और जज्बे ताउन से है तेज दांतों के माबैन भी ज़बान महफूज। क्या बात, थोड़ा सा ट्रांसलेट कर दिए सर। खुलूसे कार means doing, sincerity in any activity, in any work, and habit of cooperation, the spirit of cooperation to help others. The tongue existence is because of this. They cooperate with the teeth and work with sincerity. Yeah, क्या बात, So that's why it survived. Yeah, So, I will use that in Hindi version. तो ये शेर याद आ गया इनकी इस बात से।
which is not that context, but anyhow. I want to share only about one chapter, that is knowing English, please, democratization of Education. education. So I want to reflect upon that. Please, sir. There are three pre-assumptions, I feel, that was the dominant force for Karpoori Thakur's views regarding education. One is that perhaps education is the only peaceful means to bring a just society. I think that Karpoori Thakur's entire activities related to education support this preassumption which I am presuming regarding this. Wonderful. So this is my first presumption regarding this. The second presumption is very much related with this, that it's not only just society, but it also ensured the empowerment of us and empowerment of society as a whole. So education is the only means to bring only peaceful means to bring just society and empower the people as a whole. This was the first preassumption which perhaps no politician with sincerity accepted this. So this is the one very different and unique feature of Karpoori Thakur's ideology about education. The second thing what I presume with this is that my second presumption about this chapter and Karpoori Thakur ideas regarding education, and that is education cannot survive, cannot function effectively without support of the political system. That's why education is a subsystem. So I am very strong supporter of this idea that please don't consider that there should not be politics in education. Education survive on political agenda. That's why if you don't have the congenial, supportive political agenda in support of education, if it has to bring a just society, that is a very different kind of political agenda we need. A third preassumption is, if we believe to bring a just society through education, it's only the inclusive education that can do that. That's why we have to ensure the inclusiveness in education. And that inclusiveness can be ensured only in two ways. The one is that the door of education should be open for all. And accessibility, door means not only open the door that anyone can get admission, but if if the child is not reaching to a school should reach to the child. That inclusiveness we need for this purpose. And that's possible only when you make this society, this hierarchy, and particularly economic and more social hierarchy should be finished. That's why the commitment for Karpoori Thakur to make quota within the quota ensure the inclusiveness of the society. That's why it's not separate from education, but education can play really to bring a just society, which a democratic education system should ensure, is the key thing that not only Karpoori Thakur believed on it, but he did that. So action, Lohia in action, what he was saying is the proof of his action, his policy for this purpose. A third thing, as I said, that door should be open for all. And there are
n number of obstacles in the way of access. It seems to be very easy, but n number of obstacles are there in the way of this access. And out of these, there are two biggest obstacles. One is language, another is culture. So, language, unfortunately, our legacy, which brought from the colonial legacy, we made that a supremacy of English, to be very straightforward and simple. It's a supremacy of the English. There are a lot of things one has to share about this, but there's no need, highly. You all are very much aware about those things. So, supremacy of English, and that's why it's not only that feudalism exists in economic affairs, but feudalism exists in educational affairs also. That's why one has to break that feudalism in education, and there is no way except to attack this supremacy of English. Supremacy of English doesn't mean that one is against English, as he rightly pointed out, but supremacy of my own language, my own mother tongue, my own official language, which we have decided democratically to be the state official language or national official language, means Hindi. Karpoori Thakur forcefully, without any hesitation, advocated this, practiced this, implemented. So that's another very different aspect of Karpoori Thakur's vision and his style of governance. And the last thing which one has to share, that anything cannot be possible without having really the sincerity and your own character. Lot of reflection he cited during his presentation about his character, his simplicity, his honesty, his commitment to follow that honesty. And one more thing which he advocated and practiced, that politics must be free from corruption. And particularly the power politics should be free from corruption. So these things combined, we mix that education can be used as an effective tool to ensure empowerment, to make the society a just society. Time will say how far he became successful in that, what's the impact of that decision. Some of the reflections already mentioned in his book also, that enrollment increase, that not only at the school level but in higher education, those who never dreamed to enter into some prestigious universities of the Bihar, their enrollment rate increased tremendously within a few years of this decision. So these are the certain practical proof also available, but anyhow, this matter of a discussion, one can debate about it. Fortunately or unfortunately, the book is silent about that debate, but perhaps that is not possible in that kind of book.